Good morning, dear students. Today we are going to study English subject and chapter name is We Are Opposite and unit number 5. आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने वाले हैं एंड यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 1 वी आर अपोजिट। ये क्या है, लेसन का नाम है। सो नाउ लेट्स रीड द लेसन। टेक आउट इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 42, यूनिट नंबर 5, लेसन नंबर 1 वी आर अपोजिट्स। लिसन, सिंग एंड इनैक्ट। We are opposites and I shall tell you more. I say after and you say before. I come in and you go out. We are opposites. Let's give a shout. I look up and you look down. I like to walk, you run to town. I am small as smaller can be. You are big, much bigger than me. I say stop and you say go. We are opposites. I told you so. We are opposites. It's like I said before. Think on your own if you want any more. I think it's hot. You think it's cold. I say it's new. You say it's old. Now let's explain the lesson. Listen, sing and enact. We are opposites and I shall tell you more. I say after and you say before. I come in and you go out. We are opposites. Let's give a shout. Let's give a shout. I look up and you look down. I like a walk, you run to town. I am small as smaller can be. You are big, much bigger than me. I say stop and you say go. We are opposites. I told you so. We are opposites. It's like a said before. Think on your own if you want any more. I think it's hot. You think it's cold. I say it's new. You say it's old. First stanza is we are opposites and I shall tell you more. I say after and you say before. We are opposite means मतलब हम एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है, अपोजिट है, राइट। I shall tell you more मतलब मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, राइट। सो आई से आफ्टर मतलब क्या, मैं बोलूँगा। आई से आफ्टर मतलब क्या, मैं पीछे, मैं बाद में। एंड यू से बिफोर तुम बोलोगी बिफोर मतलब क्या, सामने, पहले बोलोगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंडा इज सेकंड स्टैंडा। आई कम इन एंड यू गो आउट। वी आर अपोजिट। लेट्स गिव अ शाउट मतलब क्या, वो बोलता है आई कम इन मतलब मैं अंदर आता, एंड यू गो आउट तो चली जाए मतलब क्या, ये भी क्या हुए, अपोजिट हुआ मतलब क्या, विरुद्धार्थी शब्द। सो इन एंड आउट फर्स्ट क्या हुए थे, आफ्टर एंड बिफोर। फर्स्ट अपोजिट वर्ड इज आफ्टर एंड बिफोर। ओके, सो ये क्या हुए, अपोजिट वर्ड। सो उसका ये अपोजिट का सिंबल है, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, इन एंड आउट। ओके, सो ये क्या है,
ये भी अपोजिट वर्ड हुए। सो इन मतलब क्या, अंदर, आउट मतलब क्या, बाहर। आफ्टर मीन्स क्या, पीछे, बिफोर मीन्स सामने, पहले। ओके, सो वी आर अपोजिट, लेट्स गिव अ शाउट मतलब क्या, ऐसे ये बाहर जाएगा और एक अंदर आएगा। सो ये क्या हुए, अपोजिट हुए। एंड थर्ड, I look up and you look down. I like to walk, you run down. मतलब यहाँ पे भी एक अपोजिट वर्ड हुआ। सो वो बोलते हैं मैं ऊपर देखूंगा। I look up, वो up मीन्स क्या, ऊपर। And you look down मतलब क्या, तू नीचे देखोगे। Up down ये क्या हुआ, अपोजिट। Up down ये क्या हुआ, अपोजिट। राइट, सो बोलते आई लाइक टू वॉक एंड यू रन टू टाउन मतलब क्या, मुझे चलना पसंद आता है। आई लाइक टू वॉक एंड तुम्हें दौड़ना मतलब तू दौड़ के टाउन में, नगरी में, इलाके में जाए। आई एम अ स्मॉल एज स्मॉलर कैन बी, यू आर बिग मच बिगर दैट मी मतलब यहाँ पे भी देखो अपोजिट वर्ड आए, small, big and smaller, bigger. Okay, so small, big and smaller and bigger. Okay, so बोलते हैं आई एम स्मॉल मतलब क्या, मैं छोटा हूँ। आई स्मॉलर कैन बी एंड यू आर बिग मतलब तुम बड़ी हो, मैं छोटा हूँ। स्मॉल हूँ, स्मॉल बिग, देन स्मॉलर बिगर मतलब क्या, इससे भी छोटा। एंड बिगर मीन्स इससे भी बहुत बड़ा, बिग से भी बहुत बड़ा, बिगर। आई से स्टॉप एंड यू से गो मतलब मैं रुकूंगा, मतलब मैं ऐसे कहूँगा, मैं स्टॉप रुकूंगा। यू से तुम ऐसे बोलूंगी, इसे गो मतलब रुक जाओगी, मैं स्टॉप होगा। सो ये भी क्या हुआ, अपोजिट वर्ड। स्टॉप मतलब रुकना, गो मतलब जाना। स्टॉप, गो। We are opposite. It's like I said before, think on your own. If you want any more. I think it's hot, you think it's cold. तो देखो, बोलती है, मुझे लगता है, मुझे गर्मी लगती है, तुम्हें ठंड लगती है। मतलब क्या, ये भी अपोजिट वर्ड हो गया, हॉट एंड कोल्ड। Hot and cold. It's new and you say it's old. मतलब मैं कहूँगी नया, तुम कहोगे पुराना। Old means पुराना, new means नया। यहाँ पे भी opposite word है। So new means नया and old means पुराना। Right? So ये सारे क्या हुए, अपोजिट वर्ड। ये सारे क्या हुए, अपोजिट वर्ड। Okay, so now we will repeat first, after and before. Second, in and out. Third is up, down. Now we will repeat. After means बाद में, before means पहले, सबसे पहले. So second is in means अंदर, out means बाहर, अंदर बाहर. Third up down, ऊपर नीचे, नीचे. Up means ऊपर, down means नीचे, ऊपर
नीचे. Small and big. Small means छोटा, big means बड़ा. Then fifth, smaller and bigger. Small छोटा, smaller उससे भी छोटा. Big means बड़ा, bigger means उससे भी बहुत बड़ा. Six is stop, go मतलब रुकना, जाना. Seven, hot and cold. गरम, ठंडा. Eight is new, old. नया, पुराना. ये क्या हुए था? Opposite word. क्या हुए? Opposite word. मतलब क्या? मतलब विरुद्धार्थी शब्द.